नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आफ्टर सो लॉन्ग मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। एंड ये मैंने बहुत पहले शूट किया था बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस एडिट नहीं कर पाई थी, अपलोड नहीं कर पाई, सो हियर आई एम डूइंग इट। So first of all, I am with clean and moisturized face, not moisturized, just clean face. But before that, I'm just gonna add some lenses to my eyes और मैं use कर रही हूँ Olens के Russian Smoky. These are one day lenses, so it's very easy to put and irritate भी नहीं करते आपके eyes को, काफ़ी comfortable थे. So this is the first time I tried Olens and this is not sponsored guys, so yeah, I bought them. That's why I'm using them. So now for the face, I'm gonna moisturize my face. I'm using Pond's Super Light Gel and I'm taking this moisturizer all over my face and blending it really well into my skin ताकि मेरा जो मेकअप है अच्छे से इस पे बैठे। अब हम चलते हैं मेकअप की तरफ और उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी आइज़ करूँगी एंड आइज़ में थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में करने वाली हूँ आज। सो आई एम जस्ट टेपिंग माई कॉर्नर्स आइज़ पे ताकि एक शार्प एज आए बिकॉज मुझे वो शार्प लुक चाहिए। अब मैं ले रही हूँ पैक का स्पॉटलाइट कंसीलर इन द शेड 10 और उससे मैं अपना आई बेस कर रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट माय आइज़ टू लुक इवन फॉर दिस लुक। तो अब मैं ले रही हूँ यू कैन बी की फ्रूट पाई फिलिंग पैलेट और एक पेंसिल ब्रश के साथ मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ और इस तरह से सिर्फ कॉर्नर्स में एक विंग लाइनर की तरह मैं स्मज कर रही हूँ। Also I'm just taking the eyeshadow to my inner corners as well, just like this, and I'm doing the same to the other eye as well. Also I'm adding a little bit of black as well to darken the wing और इस तरह से I'm just smudging it with the blending brush. एंड यू कैन सी बहुत ही ग्रेडियंट सी लुक आ रही है। स्मज्ड सा आईलाइनर है, विंग्ड आईलाइनर बट वेरी शार्प एज वेल। नाउ आई एम जस्ट कट क्रीजिंग द इनर कॉर्नर्स ताकि जो इनर कॉर्नर्स का जो मैंने आई शेडो लगाया है वो थोड़ा सा क्लीन हो। एंड आई एम टेकिंग अ बेज स्किन कलर आई शेडो एंड आई एम जस्ट पुटिंग इट विद माई फिंगर्स ऑन माई लिड एंड सेम आई शेडो मैं लगा रही हूँ अपने ब्राउ बोन एरिया में भी ताकि थोड़ा सा लुक डिफाइंड लगे। Now I'm gonna do my eyebrows और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्राउन आई शेडो from the same palette and I'm just filling in with a angular brush just like this. Now I want some glam to my eyes, तो उसके लिए मैं पहले लगा रही हूँ अर्बन डिके की glitter glue and I'm just applying all over my lids, tapping it really nicely and उसके बाद मैं ले रही हूँ LA Splash का glitter in silver shade and एक fluffy brush के साथ I'm just patting the glitter on. It looks really beautiful as if there's stars in the sky. It just looks beautiful. And then I'm just taking off the tip और आप देख सकते हैं कितनी sharp edge आई है आई शेडो की and this is what exactly I wanted to do. और जितना भी glitter गिरा है मैं उसी टेप से उसे निकाल रही हूँ। Now let's do the face. पहले मैं लगाऊंगी Forever 52 का concealer in the shade 8 Piccolo. It's a very nice peachy tone concealer and it matches with my skin really nicely. And I'm just applying under my eyes, sides of mouth, side of nose and फिर एक concealer brush की मदद से I'm just gonna blend it out really nicely. Now for the foundation I'm using Sugar Ace of Face Foundation Stick in the shade 40 Brief and I'm just applying all over my face and इसे मैं blend कर रही हूँ Cuffs and Lashes के angled foundation brush से and you really have to work really quickly with this foundation नहीं तो ये set हो जाती है, so be quick and blend it really nicely if you don't want any patches or weird looking skin. So बहुत अच्छे से blend करना है and once it's blended it looks just flawless. Now I'm taking this angular little brush और मैं अपने inner corners भी थोड़े से wing in कर रही हूँ ताकि एक foxy cat eye look आए with the eyeshadows only and this is how my eyes are looking after winging my inner corners as well.
For the eyelashes, I'm using Cups and lashes in the shade, in the style Daman, and I'm just applying to my eyes. They are beautiful, fuller looking lashes, and मैंने कोई eyeliner लगाया है separately, just the lashes and the eyeshadow. That's it. Now I'm just going to do my lower lash line, and मैं same pencil brush लेके थोड़ा सा brown eyeshadow लेके अपने lower lash line भी smudge कर रही हूँगी. Now for the highlighting my face, I'm using L'Oreal Infallible Concealer in the shade 312. Applying under eyes, highest points of my face, bridge of nose, forehead, chin पे लगा के I'm just gonna blend it really nicely. I'm taking a powder brush और मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का ट्रांसलूसेंट पाउडर इन द शेड 4, और वहाँ लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने हाईलाइटिंग कंसीलर लगाया था, जस्ट टू सेट द कंसीलर एंड स्पेशली अंडर आइज, बिकॉज वहाँ पे मेरे काफ़ी क्रीजिंग होती है. And when I'm happy, I'm just going over with a puff as well, just to mattify the whole look. Now I'm taking Sugar Contour Day Face Palette in Subtle Summit shade, और एक फ्लफ़ी आई शेडो ब्रश से मैंने अपने नोज़ कॉन्टोर किया. एक एंगल ब्रश से मैंने अपना चीक्स हैं जो अपने वो कॉन्टोर किए, एंड ऑल्सो जॉज. I'm also gonna do the blush, and for that I'm using the same brush and I'm using the same blush palette like Contour Day Face palette. और मैं जहाँ पे भी मैंने contour किया है वहाँ से हल्का सा ऊपर लगा रही हूँ और थोड़ा सा अपने नोज़ पे भी लगा रही हूँ. एंड हाइलाइटर भी सेम यूज़ कर रही हूँ पैलेट से, जस्ट अप्लाइंग विद माई फिंगर्स टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माई चीक, जहाँ पे आपकी चीक बोन होती है बेसिकली, एंड ऑल्सो द ब्रिज ऑफ नोज़ एंड क्यूपिड्स बो एज वेल. For lips I used quite a lot of products. सबसे पहले मैंने यूज़ किया NYX का लिप लाइनर इन द शेड नटमैग. इट्स अ रियली नाइस ब्राउन लिप लाइनर जिसके हेल्प से मैंने अपने जो लिप्स हैं लाइन किए. द सेकेंड प्रोडक्ट आई यूज़ कप्स एंड लैशेस लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 06 बारी जावा. इसे मैंने आउटर कॉर्नर्स पे एंड आउटर स्कर्ट्स पे लगाया अपने लिप्स के. सेंटर में लगाया मैंने मिस क्लेयर का पावर मैट लिपस्टिक इन द शेड 02, एंड लास्टली आई अप्लाइड अ ग्लॉस, एक हीरो लिप ग्लॉस इन द शेड 8, एंड दैट्स हाउ आई डिड माई lips. I used total 4 products for my lips, but I really loved the outcome. And this is the whole look. अब मैं अपने lower lash line कर रही हूँ. I'm using Swiss Beauty 4D mascara. I'm not applying mascara to my upper lash line because lashes already काफ़ी heavy थी. And this is the final look, and I'm just gonna do a sleek pony to match with this look, and this is how the whole look looks like. This is a very nice sexy cat eye foxy eye look जो कि आप किसी पार्टी में जाकर कर सकते हैं, and this will definitely change your look if you are looking for that. And I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and if you are still not subscribed, do subscribe me, help me grow, and I will see you later. Till then, bye bye, take care, stay beautiful and stay healthy.